Hello. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, kali gote question diya itla. Barila. Aଜ୍ଞା sir. केते नंबर देथिले? 25. ओके ओके केते वाला रे म्यूट करो समस्त 400 and 1200. या गोटे केते बारी जी 400 Another one 1200. ओके ओके समस्तंगर सर कर दिनु टिके सर शॉर्टकट टा कर दिनु लॉन्ग हे गला टिके ओके ओके ठीक अछि there are two numbers when the first number is increased by 125% the obtained number is 300 less than the second number and in the first number is increased by 150% then the obtained number is 200 less than the second number. See, let the first number be mone kara jo mu 100 nei gari second number ko mu ebe x nei ji. Please try to understand. When the first number is increased by 125% ये जदि 125% बढ़ी जाए ताले जे केते जो ताले 225% ही जो बा 225 यूनिट ही जो and this number will be 300 less than the second number, that means this is x minus 300. If the first number is increased by 150%, then the obtained number is 200 less than the second number, that means this is 250%. This is equal to x minus 200. So you see the gap between these two numbers is nothing but the 100. But the difference between this percentage value is that is 25%. Kahar 25%? The first number, because first number 225%, first number 250%. Tale first number 25% is 100. Find out the two numbers. I can directly say I am calculating the first number. So 25% equal to 100. That means 100% equal to 400. So I got the first number is the answer. This is the answer. How I can find out the second number? I can find out it very easily. Just either 150% bahar kar diya. Sorry, 225 nole 250. I am finding out the 250% of this number. Kete bata hale 1000 hi jo 1000. But ei jo 1000 ta jo 250% ta, this is x minus 200. It implies that x will be equal to 1200. I got this is one of the part of the answer. So x equal to 1200. Question go here, find out both the numbers. So one is 400, other is 1200. 1600 habo Sum magi ji both yeah, very good. That is the sum mate magi ji. Sum will be equal to 400 plus 1200. Answer will be kiti dale 60. ए गोटे थिला बोधे okay yes sir move to the next one एमे देखो in an high garden corner लिखा है okay let it go चलो in a garden 60% of the trees are coconut tree 25% of the number of coconut trees mango trees and 20% of the number of mango trees are apple tree. If the number of apple trees are 1500 then the total number of trees in the garden is देखो generally हमें actually direct भी कर दे परिवार number of apple tree 1500
एप्पल जे अधिक ताकू से टाइम बढ़ेबा ए भलिया भी करि परिबा अदरवाइज वी कैन डू इट इन द मर्जिंग रेशियो हम जो बाहर करबा हम केमति देखो मर्जिंग ऑफ रेशियो हम बाहर करबा हम जानि सारी ऑलरेडी there are how many types of tree you can see 60% of the trees are coconut tree line method भी करि परिबा हम जने line method पढिबा at that time we shall discuss once again you will recall total tree केते अछि एठी ता भीतर किछिटा जे कोकोनट ट्री ता भीतर किछिटा पुनी मैंगो ट्री एंड मैंगो ट्री जो किछि पार्ट है एप्पल ट्री 60% of the trees are coconut tree 60% माने 3/5 60% is nothing but 3/5 25% is nothing but 1/4 20% is nothing but 1/5 total tree of 60% coconut tree if this will be 5 then this will be 3 25% of the number of coconut tree are mango tree coconut tree यदि 4 है ये ताले केते हो 1 20% of the number of trees are apple tree ये 5 है ये ताले 1 हमको अब कौन करियो आज जस्ट मर्ज द रेशियो एंड हम जानी जे मोर देन 3 टर्म्स से गले मर्ज एमदी करिया we have to just copy this 3 here 1 here 4 here 5 and here 5 just multiply now 5 चौक 20 पंचा 100 5 चौक 20 3 60 5 5 3 15 3 के 3 क्वेश्चन कौन कह इफ द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज 1500 3 यूनिट को 1500 1 यूनिट को 500 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन थाले केते दैट इज 100 यूनिट 100 यूनिट we shall move to the next one सर हमें एथरे टोटल टाको 100 नहीं कले भी होबो ना हां देखो मु जानि नथिली जे 100 एटा डिविजिबल हे जिवो बोले नहीं जे तो डिविजिबल हे गला तो हमहु सुविधा हे गला जब 100 रो 60% 60 60 रो 25% बाहरी जाउ ना 15 जदी पॉइंट आसी थान हमको असुविधा करि थान अदरवाइज यू कैन टेक द 100 हां नले किछि एंदी असुविधा हम देखिबो लाइन मेथड दिले पढी साला परे करिबा एंड दिस विल बी मोर इजी एक्चुअली एट दैट टाइम इन ए सिंगल लाइन ओनली यू कैन गेट द आंसर A, B, C and D purchase cine multiplex for rupees 56 lakhs. The contribution of a B, C and D together is 460% that of A alone. The contribution of A, C and D together is 366.66% that of B's contribution. And the contribution of C is 40%. That of A, B and D together, the amount contributed by D केते हमें भी लिखिबा देखो हम ऑलरेडी रेशियो रे एक क्वेश्चन में डिस्कशन मु करिथिली the share of A is एतकी part of the remaining 3 B रो remaining 3 at that time we have applied the concept of merging ratio and the same way we will apply here also the concept of the merging of the ratio merging of ratio is a very important concept while solving the arithmetic question always I am repeating please फास्ट हम समस्त रेशियो के लिए क्लियर हो जा देखिबो अरिथमेटिक हम कहली बहुत इजी सो एठी जो कहि जी ए बी सी डी जो 56 लाख टका दे जो किनी जंदी कंट्रीब्यूशन ऑफ बी सी डी टुगेदर बी सी और डी टुगेदर रो शेयर टा ए रो 460% 460% दैट मींस 400 इज 4 वेरी सिंपल 400 इज 4 60 माने 3/5 5 चौक 20 3 23/5 460 by 100 गले 23 into 20 5 into 20 the contribution of A plus C plus D together is 366.66% of B contribution see how we are breaking this one 366.66 माने 300 और 3 66 और 2/3 और 3 plus 2/3 that is 11/3 and that of B contribution and the contribution of C ro contribution 40% of ABD ABD रो 40% के 2/3 now कोन करिवा ताहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम ताहले ऐड कर दबा ऐड करके एलसीएम नहीं वेरी गुड एटी केते बडली 28 या एटी केते 14 हो या एटी केते ताहले 7
ABC 28 नहीं जो ये 28 तो भाई ये तो ठीक अच्छे एठी खाली मु एबे 2 2 खाली मल्टीप्लाई कर देबी दिस विल बी 22/6 एठी ताले मु खाली 4 4 खाली मल्टीप्लाई करिवि दिस इज 8/20 you see a is equal to ऊपर तले अछि 5 b मझी तले अछि 6 c तले 8 अछि 8 6 14 5 19 दीटा ताले बाकी 9 हबो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टोटल केते हेतला 28 है a b c d now directly we can say टोटल जदि 28 यूनिट को केते लक्ष टका कहि 56 लाख हे जे ताले व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डी दिस इज 9 यूनिट 9 यूनिट केते लाख होता है 12 सॉरी और सॉरी बुझियला समस्त yes sir move to the next one. The difference between two numbers is 1660 if 6% 6.5% of one number is 8.5% of the other the smaller number केते देखो जेते बेले क्वेश्चन रे प्लस माइनस देई नथिबो what I am telling you have to understand first plus minus suppose a रो 20% b थु 5 अधिक कि a रो 30% b रो 50% 6 अधिक ए भलिया न देखि जदि मते डायरेक्ट रिलेशन दे थाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम एटा भी लगे पाइबा ए रो 30% b रो 40% संगे समान a रो 50% c रो 80% and yesterday we have already discussed such types of question you might have remember that a रो 30% equal to b रो 40% directly we are writing a by b equal to केते थाले 4/3 लास्ट क्लास हम किछरा सिंपलीफिकेशन टाइप रो क्वेश्चन करितिले सेही जगह रे एबुला सिचुएशन हम फेस करितिले एग्जैक्ट से भला तुम निजे कहलो सबले हम रेशियो को टारगेट करबा इन ऑल दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ द टू नंबर देन ओनली विल प्रोसीड टू दिस पिला नहे कोन करंदी मु तुम कहि दउजी कोन करंदी ना x - y = 1660 लिखि देबे तापरे जनगर 6.5% आ गोटे रो 8.5% संगे समान x रो 6.5% इक्वल टू 8.5 आ जनगर y रो लगे कि सॉल्व करी x इक्वल टू सम y आनी के पुट करी बाकी हमें एक्चुअली शेयर करबानी हमें कोन करिया ताले रेशियो बाहर कर दबा सो जदी x रो 6 एंड प्लीज म्यूट कर का y रो केते हो ताले 8.5% if we'll cancel out this percentage x by y will be equal to 2 16 x 17 by 2 13 by 2 so this will be 17:13 रेशियो पाई गले हमें कहि पारे तांको भीतर गैप 4 यूनिट को 1660 1 यूनिट को 415 स्मॉलर नंबर केते 13 यूनिट 5200 5330 5345 सॉरी 95 हेला बोले 13 into 452 13 into 10 130 5330 plus 65 5395 मु देखोडा चेष्टा करी जे गुटे लाइन रे बुझिया भी न बुझिबो ताले हमें ता पूर्व लाइन ता लिखिबा अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट द आंसर मु जदी a रु देखो मु कोन कहली गुटे संख्या a अछि आ गुटे संख्या b अछि मु जेते बेले a रो 15% जेते हेबो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड a रो 15% जेते की हेबो मु सेते की b रु जेतेले माइनस कली b ता तार 10% कमी गला once again I am telling a आउ b दुईटा नंबर अछि a रु जेते बेले मु 15% माइनस a आउ b दुईटा संख्या अछि मु जेतेले एठु माइनस कली a रो 15% ये कमी गला केते एक्चुअली 10% ताले ये कमी गला ता माने a रो 15% यदि 6 होइतो b रो 10% भी ताले 6 होइतो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड a रो 15% जेते भी हेबो चाहे से 6 हो से 9 हो मु a रु b रु सेति की माइनस कोले बट सेटा हिसाब कोला को b मात्र 10% ही कमी जे ता माने मु कहि परिबिनी कि a रो 15% जहा b रो 10% से yes sir Sir, you can directly solve these questions. How?
when 60% number is subtracted from another number, second number reduces to its 52%. 2 its 52% देइछि, that means 2 is 52% लिखिबाटा जा, this is by 48% लिखिबाटा था. So x रो जदि मु 60% नेबी, ये equal to y रो actually 48% हबो. Because a रो 60% b रो काटिले b 48% खसुजी. This is nothing but x and y equal to 4/5. This is the answer actually. If हमें यदि एरा बुझी ना पारो, then we can write down one line more. How? When 60% of a number is subtracted from another number, let another number is y. Y रू मु एबे कोन करिवि, x रो 60% को माइनस करिवि. माइनस करि देला परे आउ गोटे संख्या 52% कमिवो. 52% कमिवो, 52% को कमिवो माने केते परसेंट ताले कमिवो, ताले 48 कमि जेबो. So the another number reduces, y minus y रो 48%. हेबो कि नहीं? जेतेला हमें x रो 60%, when 60% of a number is subtracted from another number or second number, the second number reduces by 48%. माने जेते थिला सेति की प्लस सॉरी 48 ताने कमी जेबो. So now you can write down this y cancel out, minus minus cancel out, you will directly get this equation. Either you can write down like this or मु जेमति बतेली सेमति हम मूलरू हमें जेमति आईडिया लगे कि सेमति करि पारे. सर को सर ए कांसेप्ट आउथर कहले ए जोडा एटा 50 a minus 50% 15% हो जी से कांसेप्ट. देखो देखो वेरी सिंपल. देखो मने कर मो पाखरे 100 टंका थिला, तो पाखरे 200 टंका छै. दिस इज माय सेल्फ, दिस इज यू. मोर 40% जेते हेबो, केते हेबो 40 ताले मु तमटु 40 टका कमे देली. ताले तम जो 40 कमे, ये तमरो तमने केते परसेंट कमिला? 20%. मु कहि परिबि कि नै मोर 40% रो वैल्यू जहा, तमर 20% रो वैल्यू ताहा कि नै? यस. ताले मोर आ तम जे रिलेशन अछि कोन 20/40 20/40. so 100/200 के 1/2. That's very simple. बुझियला? Yes sir. Okay. Move to the next one. The same thing, that is minus till article plus thila. When 20% of a number is added to another number, that means gote sankhya ro 20%. The second number increases by its 48%. So this will be equal to y of 48%. Just write down x by y will be equal to 48/20. 12 रे काटी देले 12 चौक 5. Next one. The same thing is here. See, the sum of two numbers is 520. If the higher number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal. कौन लिखिबी इक्वेशन जे ताले आंसर ठीक हबो जे को. मते फर्स्ट लाइन कोठु स्टार्ट करिया, मु जेमि इक्वेशन उडे इक्वालाइज करी लेखुतली, मु सेमति लेखिया पे चाहूची. कौन इक्वेशन लिखिबी के कहि परिबो को? क्वेश्चन बुझा बोल से ताबरे को. सर को फर्स्ट रो 96% इक्वल टू सेकंड रो 112% सर. या वेरी गुड जीनियस. देखो मु कहे ना सब क्वेश्चन बुझी गले एक्चुअली काम इजिली खत्म. क्वेश्चन है डायरेक्ट लिखि जे रे. If the higher number is decreased by 4% and the smaller number is increased by 12%, then the number obtained are equal. माने फर्स्ट नंबर को 4% कमेले जेते हेबो, सेकंड नंबर को 12% बढ़ेले सेते हेबो. तो फर्स्ट संख्या को जदि मु 4% कमे दिए ताले केते परसेंट हेबो? 96.
सो x रो 90% 96 सेकेंड संख्या को 12% बढ़ेले एग्जैक्ट सेति के हम दैट मींस y रो दैट मींस 12% सॉरी 12% बढ़िबो दैट मींस 112 हेजबो so now both the numbers becomes equal it implies that x by y equal to 112 divided 96 8 रे काटी दियो 12 14 so that is equal to 7 by 6 क्वेश्चन कहिला दुईटा नंबर को मिसले 520 हेबो दुईटा नंबर को मिसले केते यूनिट हेबो 13 यूनिट 13 यूनिट को 520 1 यूनिट को केते होता 40 स्मॉलर नंबर केते y हला स्मॉलर नंबर 4 यूनिट को केते 160 that is my answer 240 sir. 6 यूनिट ना Wait. हेलो कौन 6 यूनिट ना 6 यूनिट ना 4 ओके सॉरी सॉरी सर 240 ओके थैंक यू 6 unit will be equal to 200 এটা দেখো এটা মানে ইজি কোশ্চেন মানে দুই তিনটা কোশ্চেন ফর এন এক্সামিনেশন ইট ইজ রিকোয়ার্ড টু গেট 36% of maximum marks to pass a student score 130 marks and failed by 85 marks then the maximum mark of the exam just দুইটা ডাটা মধ্যে ইম্পর্টেন্ট তুমি নিজে এবে কই জনা পড়ি যাবে গোটে স্টুডেন্ট 36% মার্ক পাইকেরি সরি 36% মার্ক পাইলে পাস জনে 113 মার্ক পাইকি 85 মার্ক পাই ফেল ହେଇଛି তাহলে পাস মার্কটা কেতে মার্ক দরকার 113 plus 85 85 and this is equal to the 36% so this is equal to 5 3 8 198 1% equal to 6 so what will be 100% 600 maximum mark of the exam सर 36% 198 हेले कोन 6 होची कि 1% sorry ना हो ओहो डिविजिबल sorry ना 300 को 18 है नहीं wait 550 होगा सर ना पॉइंट रे बारे हाँ okay कहला जी we'll do that one. Yeah 198 so 198 divided by 198 divided by 36 into 36 108 ना मो ये करी 9 25 चौ 9 चौ 9 2 9 18 1 22 440 110 500 550 yeah that's good similarly एटा करि परिबो 33% रिक्वायर पास करिया पे जण Yes, sir. 210 मार्क पाई 12 मा अधिक पाई we'll do this one एटा देखो in a test a student got 30% marks and failed by 25 marks but in the same test another student got 40% marks and secured 35 marks more than the pass mark maximum mark of the test was it তুমি নিজে দেখা কইলো জনে 30% মার্ক পাইকি 25 মার্ক পাই ফেল হই যে আউ জনে যে 40% মার্ক পাইকি 35 মার্ক अधिक পাই যে just simple মোটে লাইন ডেলি ড্র করি লেট দিস ইজ द পাস মার্ক জনে 25 মার্ক কম পাই যে 25 মার্ক পাই ফেল হই যে সো দিস ইজ ইকুয়াল টু ফেল হই যে তাহলে 25 মার্ক পাই মানে এপট গুড়া 25 আউ জনে পাস মার্ক রু 35 মার্ক তাহলে अधिक পাই बाकी जदि हमें देखिबा ताले जे फेल जी से त हमने केते परसेंट मार्क स्कोर करी 30% ओनली बाकी जे पास मार्क रो अधिक पाई से केते होई ताने 40% जदि हम परसेंटेज हिसाब रे देखिबा ये केते परसेंट मार्क अधिक पाइला 10% बाकी कम मार्क हिसाब रे केते मार्क अधिक पाइबो 60 अगेन ये वेरी गुड ये पास रु ये तामने एक्चुअली 25 कम पाइला को आउ जने पास रेली 35 तानेले अधिक पाई जे सो दिस 10% इक्वल टू 60 मैक्सिमम मार्क ऑफ द टेस्ट केते थेला एपटे गोटे जीरो सपटे गोटे जीरो लगाई दे आंसर विल बी 600
एटा एटा भी करिवो एटा ए बलिया क्वेश्चन सब टाइम वेस्ट करबानी यू विल डू भाई गोटे इनसाइड बहुत ध्यान देबो 11.11% अछि 11.11 माने केते रे फ्रैक्शन हिसाब रे या वेरी गुड 1/9 you will apply that one here it will be 1/9. yes you will apply that one here ebe if the income tax is increased by 19% and the net income is reduced by 1%, the rate of income tax is given. समस्ते जानी जो ग्रॉस इनकम कोन नेट इनकम कोन रेट ऑफ इनकम टैक्स केमती कोन लागू होय यस सर नेट इनकम माने कोन रे और सब माइनस जो होतले जो अलाउंस उड़ा या लेट्स या ताले वर्तमान हम सब अलाउंसेस नेबानी वी आर टेकिंग ओनली द टैक्स ओनली ओके सो सी नाउ ग्रॉस इनकम रो जेते भी हमर ता माने ग्रॉस सैलरी आसे वी कैन से दिस इज ग्रॉस इनकम रो आमे जदी हमर टैक्स ता गवर्नमेंट को दे दो बाकी जहां हम पाकर रही जे दैट इज द नेट इनकम दैट मींस हम हाथ को एक्चुअली जेते टंगा आसु जे व्हेन द मनी दैट वी कैन स्पेंड that is our net income but whatever may be the amount that we are receiving from the company or from the job that is the gross income वर्तमान है तमे मोरे बहुत सिंपल जिंस को we are doing such types of questions where the rule of equalization we are applying no a of this much percent equal to y of this much percent or b of that much like this we are these are the all the same types of questions where we are writing that equation now you see let the gross income of a person is 100 I am taking this is 100 I am taking this is 100 at the beginning the tax was suppose 4 then what will be net income this must be 96 later on what happened this becomes 8 or we can say this becomes 6 so what will be the net income that is 94 gradually it becomes again 5 now it becomes 95 तो मते निजे को टैक्स टा केते टंका रो बढ़िला 2 टंका 2 टंका ताले नेट इनकम केते कमी जब अरे भाई तमरो टैक्स जेते अधिक तुमको देबा को पड़िला तमरो नेट इनकम को हो सेती कमी जीवो कमी या डेफिनेटली अगेन सपोज एही जगह रो एठे तमे जोटो करो 6 रो 5 को करो कि 4 रो 5 को जेबे 1 ने 1 कर बढ़ी गला ताले एपटे ये केते कमी गला 1 ताले कमी गला but if we see then what is this percentage in this is 50% 4 थिला 6 हला माने केते परसेंट टैक्स बढ़िला 50% yes कि no 50% हां yeah but at the same time जेते बेले ये 4 रु 6 2 बढ़ी जाय ताले 2 कमी छी ताले ये केते कमिला 2/96 100 या दिस इज 48 25 चो 12 चो 12 दूने 24 1/12 जे कौन सी जगह रे भी हो एटा 4 रु 5 हला 1 बढ़ी जी दिस इज 25% but if I will calculate here this will be 1/96 into 100 25 चो 24 चो this is 1/24 like this ताले मते में तमे गोटे कथा को हो जे टैक्स जेते बढ़ुची नेट इनकम ता सेते कमउची when it comes to the absolute value 10 टंका मोर टैक्स बढ़िले 10 टंका कमियो 15 टंका बढ़िले 15 टंका कमियो but if you watch to the if we'll observe the percentage value जदि हमें percentage value को नेबा तमे मते निजे बे कहले अलग अलग हेबो कि ने here it is 50% but here it is 2 full 1/12% why because the base are different no एठी दुईटा 4 ऊपर परसेंटेज लागू है दुईटा 96 ऊपर that's why the percentage value are coming different but the absolute value that is the rupees 2 is always the constant मु ताले बे से ट्रिक एबे ताले मु एबे लगेबी कोन एबे ताले हम लिखिबा आई वर्तमान लिखि पारिबी कि ने ए एग्जांपल पे मु लिखु छी आई कैन राइट डाउन फॉर दिस एग्जांपल टैक्स रो 50% जहा नेट इनकम रो 2 फुल 1/2% yes कि नो है को Yes, sir. Yes, sir. that's good now we'll write this equation in the next slide just a second okay I'm writing just a second
सॉरी सी एठी मु से कोइ पारिबी टैक्स भाई जेते ता माने बढ़िबो नेट इनकम सेते ताले कमिबो दैट मींस आई कैन राइट डाउन टैक्स रो 19% जहा हितेबो नेट इनकम रो 1% ताले से हितेबो टैक्स रो 19% जहा हितेबो टैक्स जेते बढ़िबो नेट इनकम जेते कमिबो both the values are same 1%. It implies that tax divided by net income equal to 1 by 19. This is okay. एतार मीनिंग कोन ताले टंका टे टैक्स देला परे भी मो पाखरे आ 19 टंका ताले नेट इनकम रहूची देन व्हाट कैन बी द ग्रॉस इनकम केते बरे या 20 ओके सो रेट ऑफ इनकम 20 टैक्स ताले केते हो रेट ऑफ इनकम टैक्स केते जो ताले 5%. 5% वेरी गुड वन एक लेखन टैक्स दो 20 टंका रे टैक्स दैट इज 5%. कंट्रीब्यूशन very simple directly you can say no 1 plus 19 20 in the same question ethi bi am koi pariba this is the net income will be 23 tax will be kete thale 2 gross income will be kete thale 25 23 plus 2 25 hai jaye so what will be the rate of income tax 2 टंका लेखन प्रति 25 टंका सर वॉइस टा कोन भॉइस आसुनी Voice आसुची सुनी माने टिके आसुची ओके 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 देखो 23 टा कोन हिजबो त हमरा नेट इनकम 2 टा कोन होबो ताले टैक्स हिजबो तो ग्रॉस इनकम केते हो दुईटा को मिसै दियो that means we are paying 2 unit of tax in each 25 unit of our income so what is the rate of tax that means 2 by 25 into 100 okay now we'll move to the next ei jagare dekho the income of a broker remains unchanged though the rate of the commission increased from 4% to 5%. The percentage of slump in the business is केते गोटे ब्रोकर रो और गोटे सेल्समैन रो कमिशन बढ़ाई दिया गला आगरु ताको 4% दिया हेतला एबे ताको 5% दिया हलानी बाकी तथापि भी देखु जे तारो इनकम अमाउंट ता माने सेम रही छी ता माने कोन तारो बिजनेस रे ताले डाउन आसी yes sir. at least try to understand the concept because these are the different terms actually will come across गोटे ब्रोकर रो आगरु ताकू प्रति 100 टंका रे 4 टंका लेखन दिया होतला एबे प्रति 100 रे 5 लेखन दिया हलानी तथापि ता माने तारो अमाउंट जो जेते भी तारो इनकम ता से ता माने सेम ही रहूची ता माने से आगरु जेते ताले सेलिंग करथला एबे से ताले कम सेलिंग करूची दिस इज कंफर्म दैट मींस ओरे एग्जांपल नै कहि दी एग्जांपल देनो एटा को नै कि हम करू जे ओरिजिनली तारो बिजनेस सपोज 100 थिला 4% माने से ताले केते पाउथला 4 लेखन पाउथला 4% एबे जेते टंका भी बिकिबो ता ऊपर से 5% पाउची बट क्वेश्चन कहबा हिसाब रे इनकम सेते ही अछि माने 4 ही अछि ताले कहार 5% ताले 4 हबो 80 रो तबे मु देखिले ताले से आगरु 100 टंका रो सामान बिकुथला एबे से 80 टंका रो बिकुची ना कि बिजनेस से केते परसेंट डाउन आसी 20%. So you can do it in the ratio method also. I always prefer that method because these methods are applicable only that time when the data are very simple. 80% 80 रो 5% जेमि 4 बाहरी गला 5% जारे सब 7% थांता. At that time actually we may feel some complexity while solving by this method. So मुझे कहि पारिबी let original income be x original selling or original business turnover new turnover is y आगरु केते परसेंट पाउथला 4% एबे केते परसेंट पाइला 5% but both the income are equal so x by y equal to 5 by 4 what is the slump in business आगरु 5 होतला एबे 4 हे गला 1 रिड्यूस कला 5 ऊपर into 100
I think each and everyone is clear. Yes, sir. Yes, sir. This is also a very interesting question. On April 1, 2005, my salary increased from 10,000 to 16,000. But the amount of the income tax paid by me remains constant. If the difference in the rate of income tax is 9%. What I am telling, please try to understand. जे टैक्स रो रेट टा 9% तामने डिफरेंट हेची बाकी मु समान ही टैक्स दोची मु 10,000 ऊपर जेते परसेंट दोली अच्छा मु तमे निजे कहलो तमे अगर 10,000 टंका इनकम करूथलो एबे तमे 16,000 टंका इनकम करलनी टैक्स बाकी जेतिकी को सेतिकी ही दोउछ ताले रेट ऑफ टैक्स टा कमुची ना बढ़ुची कमुची सर या डेफिनेटली कमुची दैट मींस वेरी सिंपल मु आगरो 10,000 टंका रे जेते टैक्स मु दउथिली 16,000 टंका रे ताले मु 9% तामने कम दोजी यस कि नो यस सर या डेफिनेटली ताहले ए जो क्वेश्चन जो कहिला मु एबे लिखि पारबी कि नै तामने आई एम राइटिंग दैट इक्वेशन 10,000 रो सपोज x थिला नाउ यू कैन राइट डाउन दिस वन 16,000 रो x minus 9% just तीनटा जीरो काट this is equal to r 3 गुना this is 5 गुना so x divided by x minus 9 equal to 8 by 5 we can directly say no this 3 unit equal to 9 so 8 unit equal to 24 and 5 unit equal to 15 so what is the tax rate originally no need to find out the 5 unit sorry so this is the income tax rate मु कम भाई 3 यूनिट को न करले देखो जी दुईटा भीतर गैप न ही एका अछि नो अछि या सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करले भी तुम सेम ही पाइबो दैट मींस द इनकम रेट और सॉरी रेट ऑफ इनकम टैक्स वाज 24% क्वेश्चन जदि मते डायरेक्ट कहिता ना व्हाट वाज द रेट ऑफ टैक्स ओरिजिनल रेट ऑफ टैक्स देन आई कैन आंसर 24 बट द इनकम टैक्स पेड बाय मी वाज केते बाकी मो द्वारा केते इनकम टैक्स ताने दिया ताने जाउथला वी कैन से दैट 10,000 रो क्वेश्चन जेतले न्यूटा न पचारि जे हम सेते बेले जे केते नुआटा 16,000 ऊपर बाहर करबनी आंसर रॉन्ग हे जो सो 10,000 रो 24% केते जो ताले 2400 वेरी सिंपल दिस इज आल्सो very interesting question of the adult population in Nagpur 45% of the men 25% of the women are married what percentage of the total population of the adults are married if neither polygamy nor polyandry is in practice in Nagpur everybody know what is polygamy and what is polyandry यस सर Yes, sir. polygamy that means a woman who marries that means the tradition that to marry more than one man that is the polyandry and polygamy means more than one woman tamane question jo koichi tamane there is no practice of polygamy and polyandry that means neither a man can marry more than one woman nor a woman can marry more than one woman indirectly the question is telling in a single line that the number of men the number of married men equal to number of married women indirectly the number of husband is equal to number of wives solve kala देखिबा के दिमाग लगे परिबो 35 केते 35 मिसेरी बाय टू कर दो नहीं सोवन बहुत जल्दी 30. ना
Point Rashi answer, please be quick. कार भी नहीं. Point रे आସୁଛି 32 point. I think that is the clear one. See. भाई से एरिया रे जेतेटा हस्बैंड थिबे ताले सेतेटा इलो वाइफ थिबे. That means the number of husband equal to the number of wives. It implies that husband माने कोन है मेन मानकर किछि गुटे परसेंटेज ताले सेई एरिया रे जेते मेन अछंती तांकर केते परसेंट ताहले एक्चुअली मैरिड 45%. तांकर 45% एमाने रे हस्बैंड. वाइफ केते 25%. That means wife रो 25%. टोटल वुमेन मानकर I can make them equal. केडा बुझिलनी जे को बुझेला L okay L लाइन बुझेला. It implies that men by women will be equal to 5/9. So that is interesting. Once मु पाई गली एबे भाई मने पका गोटे एरिया रो मेन आ वुमेन मानकर रेशियो हला 5:9. मेन तांको भीतर 45% मैरिड, वुमेन 25% मैरिड. Then what will be the total percentage of the population those who are married? आमे ताले किछि बेटी अप्लाई करि परिबा. You can put the allegation method here. We can put the general weightage average method here, or we can put a very simple technique, that is the by assuming that the 500 and 900. I am taking all this into consideration. Let's discuss one after the another. First is a very simple thing is that let the number of men that were 500, number of women be 900. Question कौन कोई जी ना men मानकर 45% मैरिड एमानकर 45% केते बताले 225. तो सिंपल वुमेन मानकर 25% भी केते होगी 225 समान हेबो ही हेबोगा. सो टोटल केते जन ताहले सेठी अछन 1400 जन. तांको भीतर केते जन ताहले मैरिड हेले 450 जन. If we calculate the percentage value, 450 is what percent of the 1400? Just cancel this one. 14 3 42 3 30 से 14 2 28 2 1/7%. This is one. Now come to the second method. Second approach. We can put the weighted average method here. Weighted average. Weighted average, that means we have already learned that one in the deviation. What we are telling? 5 and 9. एमानकर 45%. Voice clear होची तो clear audible. एतार 50. हमें केमती करूथले 5 into 45 equal to 225 and 9 into 25 is equal to the केते हेबो ताले 225. So this is 225. हमें ताले कोन करिया ताले 9 5 ये केते ला 14 एपटेला 450. We will find out 44 14 into केते ला 450 हेबो. So this is equal to 14 3 42 3 14 2 28 2/14 equal to 1/7. Last
That is the allegation approach. Allegation approach, how you can put the allegation, everybody know. We can write down this 5:9. এই তলে কেতে মু এবে লিখিবি মেন মানকৰ তলে লিখিবি তালে মু 45 ওমেন মানকৰ তলে লিখি দে 25. So what I can do, this is 14 unit. Today 1 unit को 10/7. I am writing just 5 unit. 5 unit को केते होर एटा 50/7. 50/7 माने 50 माने केते होर एटा 7 full 1/7. 7 full 1/7. 25/7 केते हो ताले 32 पूर्ण 32 पूर्ण केते 25/7 सॉरी 32 पूर्ण 1/7 याद है जो मेथड लगेले भी चलिबो कॉन्सेप्ट वंस बुझी गेला हम क्वेश्चन पढिले भी देखले जणा पड़े जे एलिगेशन लागिवो वंस हम रेशियो पाई गेले बिकॉज़ हम एते क्वेश्चन करि सालेनी हमको मेन ओमेन रो रेशियो जदी 5:9 दे देला मेन रो एतकी परसेंट मेरिट ओमेन वन को एतकी परसेंट टोटल केते परसेंट क्वेश्चन पढिले सेंस रे जणा पड़ी जे एलिगेशन पढि परिबो ओके क्लियर तो एतकी समस्तंगर यस सर यस सर मानस यस सर मानस बुझियो जे कि नहीं मानस नहीं वो दिया जी ओके विल मूव टू द नेक्स्ट एला देखिलो टी करी देखो खराब ही दिवाई दा टाइम दियो ने खराब ही दिवाई दो पीछे चल Please be quick. $800. Yeah, around 800 वाला. Any other? देखो हम कर दूँगी 800 का शाश्वता. Sasmita sir. Okay. Okay, we'll check that one. See. In a school there are 1800 students. Forget about this one. We'll come to that. Last day, except 4% of the boys, all the students were present. 4% काटी देले बाकी समस्ते जाको तामने प्रेजेंट थिले तामने केते परसेंट धाले प्रेजेंट थिले तो निजे को हरे माने गर्ल्स समस्ते प्रेजेंट थिले कि नो दैट मीन 100% ऑफ गर्ल्स यस सर प्लस 96% ऑफ द बॉयज तामने प्रेजेंट थिले तापरे कोन लेखु जी देखो टुडे एक्सेप्ट 5% ऑफ द गर्ल्स आज तामने 95% अछंती all the students were present माने boys तामने पूरा 100% अछंती but in both the days the number of students present in the school were same that we can write down like this equal कर दे मु पारिबी it implies that 100% girls minus 95% girls equal to 5% girls equal to 4% boys that means girls by boy equal to 4/5 total 1800 देजे we can write down 9 unit रो value धाले 1800 1 unit रो value अब 200 number of girls मागी जे 4 unit equal to 800 yeah very good this is the right answer क्वेश्चन पढ़ो दी थर भी पढ़ो ये बुझो माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ो टाइम नहीं हो but we have to understand the questions once you understood the question then 90% is solved बुझेला समस्तंकर यस सर यस सर
Okay, we'll move to the next one. এটা भी देखो 2017. I think this is prelim questions. I think prelim or main, but it is a question of the 2017. If decreasing 120 by x% gives the same result at increasing 40 by x%. 120 को x% कमे देले जेते हेबो 40 को x% बढ़े देले सेते हेबो. ताले first we have to find out the value of x. I can write down this like अच्छा 120 को 10% बढ़ेले 120 टा केते हिबो तार 110%. हम कि नै रे ताले 120 टा हम केमति ताले जानिले 120 टा 100 प्लस 20 कोले. तो इन द सेम वे एग्जैक्टली एक्चुअली हम एक्चुअली कोन एथि भी एक्चुअली करि परिबा देखो टिके हम खाली हमर एक्चुअली कॉमन सेंस लगेबा x% यदि संख्या यदि रिड्यूस हैला this will be 100 minus x%. हेबो या is the same result as 40 को x% मु बढ़ेबी माने 40 plus 100 into x%. 100 plus Just in a 100 single plus straight line, yeah, just in a single line we got this one. This is 300 minus 3x equal to 100 plus x. This is 2x equal to 100, x equal to 50%. Sorry, 4x को 4 somewhere around 300 minus 3x. या ठीक अछि 4x को 200, x को 50, 50 हो जी भी देखो 120 को 50% खसे देले केते हो 60 और 40 को यदि 50% बढ़े देलो माने 20 ताले बढ़े देबो that will be again 60. x equal to 15%. Now the question is asking x% of 200. X% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180. Simple. x जगह 50 पुट कर दियो 210 रो 50 केते हेबो रे 105 and 70% of 180 that is equal to 126. केते परसेंट ताले ये कम कहि केते कम ताले 21 कम 21 by 126 into 100 6 रे कटि जीवो 1/6 हम समस्त जानि जे 16 full 2/6. 210 रो x% ता 180 रो x plus 20% रु केते कम 210 रो x% माने तारो 50% दैट इज 105 180 रो x plus 20% माने 100% दैट इज 126 105 टा 126 रो एब्सोल्यूट वैल्यू अनुसार 21 कम परसेंटेज अनुसार केते हेबो 21/126 into 100 जसगु बुझियला समस्तंगर Yes. जे भी जो जगह रे न बुझी पारो प्लीज फ्रीली पचारो concept clear है जिबार छै. We'll move to the next number. Before that we'll learn a very interesting concept. Okay we'll देखो एबे प्लीज म्यूट करो समस्ते नहीं वन तुम 50 हलो प्लीज रेस्ट ठीक के माने कॉन्शियस रहो ठीक है अननोइंग एक्चुअली कोन हे जिले अनम्यूट करथिले पुनी मने पडिनी म्यूट करबा ना देखो एबे कोन करबा z equal to हमें दीटा रिलेशन पढ़िबा z equal to x plus y z equal to x into y x plus y रे हमें weighted average concept सिखिबा को but till now we'll just learn this one concept that is z equal to x into y. This is a very important concept and very interesting also. You will be clear about some types of questions in a single line only. This is very interesting. Z equal to x into y relation जदि मते x और y रो जदि मु रेशियो भी जदि जानि जाय सॉरी रेशियो को परसेंटेज केते इंक्रीज किमा केते डिक्रीज जानि जाय और z केते ऊपर फरक पड़े जदि पचारे देन वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर. हाउ मु तुम कहू जे x टा मने करा जे 20% बढ़िला x टा 20% बढ़ी गले 100 रु ये केते जेबो ताले 120 और वी कैन सी x ने भी x टा मने कर 20% बढ़िला 20% माने केते होता है 5:6 ताले ये में भी 5p ये माने 6p हेबो y टा माने 30% को कमी गला भी
30% माने 3/10 कमिले 10:7 हेबो 10/7 माने let this is equal to 10q and this is equal to 7q मते क्वेश्चन पचारिबो जे z केते परसेंटेज इंक्रीज हेबो कि डिक्रीज हेबो if z equal to x into y then we can find by writing this is 5 into 10 this is 50 pq this is 42 pq ताले केते ये कमिला देखो this is equal to 8 pq परसेंटेज हिसाब रे केते हेबो 8 pq divided by 50 pq into 100 this is nothing but 16% pq cancel ताले pq रो रोल किछि एटी रहिला कि किछि भी न मूलरो भी मु कहूजी जस्ट खाली मु तो मोर क्लियर करिया पे आई फॉलोड दिस मेथड अदरवाइज हमें मूलरो ही सिखुजे whenever we are comparing two values we don't depend on the exact values of the variables rather we need only the ratio of the numbers so z equal to जदि x into y को जगह रे भी रहे x मनकर 20% बढ़ी छि y मनकर 30% बढ़ी छि देथांदा ताले z ऊपर केते फरक पड़ी थांदा then we can directly write this is x into y 20% बढ़िले 5 6 ये 30% बढ़िबो 10 रु 13 10 5 ये ताले 50 हेबो ये 13 6 को 78 हेबो केते ताले बढ़ी जिवो 28 यूनिट परसेंटेज हिसाब केते हेबो 28 by 50 into 100 this is nothing but 56%. One more concept z equal to x into y हमें समझते जानी जो एटी मुझे डिस्टेंस पुट करबे एटी स्पीड इनटू टाइम हेबो and so far as the distance is constant there is always an inverse relation between speed and the time in the same way we can say if z is constant there is always an inverse relation between x and y I'm taking a very simple example suppose you have 40 rupees only you have 40 rupees only आगरू कौन होतला तमे and this is the price of the biscuit it was originally 8 and now it becomes 10 तो 40 टंका तम पाखरे जदी अछि आगरू 8 टंका नै केले दुकानी तुमको केते पैकेट बिस्कुट दउथो 5 पैकेट्स एबे प्राइस जे तो बढ़ी गलानी दुकानी एबे तुमको केते पैकेट देबो गले 4 पैकेट्स that means price जो हिसाब रे चेंज होची 8 रु 10 that means को रेशियो रे चेंज हला 4/5 you can see the quantity change in the reverse ratio very simple जदि तमे 440 थिला मन नै जाउछो बिस्कुट पैकेट मनकर 10 टंका थिला 4 पैकेट होतला एबे कहि बिस्कुट पैकेट 20 हे गला डेफिनेट तुमको ताले 2 पैकेट ही मिलिबो प्राइस जदि डबल हे गला क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी तुम यदि डबल कर देलो प्राइस ताले कि हाफ हेले कि तुम क्वांटिटी ताले डबल किनि पारिबो दिस इज द रिलेशन सो z जे पर्यंत कांस्टेंट अछि चेंज हेनी से पर्यंत x is inversely proportional to y or there is an inverse relation between x and y now we can say x if p is to q रे change हुए then we can say y a is to b नवा very simple the first alphabet x यदि a is to b रे change हुए y will be change in the ratio केते धाले b is to like this one relation हमें अब derive करि परिबा जे expenditure equal to हमें कोन जानि लेबे price into quantity एतार ऊपर ही डिपेंड करू so if expenditure is constant expenditure यदि constant अछि then there is always an inverse relation between price and quantity. It implies that if price will change in the ratio, we have written like this, in the ratio A is to B, then quantity will change in the ratio B is to. This is very important. Clear है कि समझता Yes, sir.
Very simple क्वेश्चन को जीवा हम डायरेक्ट है price of sugar rises by 20%. By how much should consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? That means expenditure is constant. If the expenditure is constant, then there is always an inverse relation between price and the quantity. So price of sugar rises by 20%. That co-ratio change habo. That in the change in the ratio 5:6. Every आउ मो लेखुनी 20% equal to 1/5. I hope समस्त इजली जिनसा लाइव बुझी पारुछ. Yes, sir. So quantity will change in the ratio 6:5. 6:5 माने ताले केते हो ताले 1/6 થઈ જવો. So that means 1/6 into 100 equal to 16 fold 2/3. बुझियला? Yes, sir. The price of milk has reduced by 20%. Milk ro price ta 20% reduce hegala. To keep the expenditure unchanged, the present consumption is to be increased by kete. The price of milk has reduced by 20%. Price of milk has reduced by 20%. 20% mane 1/5. So this will be 5:4. Please mute karo guys. Then the change in the ratio of the quantity will be 4:5. So this will be 1/4 into 100. We can say this will be 25. In the same thing, the price of sugar is increased by 2%. If the expenditure on sugar has to be kept the same as the earlier, so price 20% increase is 5/6. Quantity change in the ratio will be greater than 6:5. Kaharo ratio magiji? The reduction in consumption. What is the reduction in consumption? 1 to the original consumption. What is original consumption? 6. So the answer will be 1:6. The reduction in consumption is to the original consumption. That means reduction in the quantity to the original quantity. That is 1:6. Move further. Price of a commodity has increased by 60%. The money which was sufficient to purchase 40 kg of the commodity will be sufficient to purchase what amount of at present तामने एठी भी एक्सपेंडिचर ताहले सेम रहिला एज फॉर द क्वेश्चन जो पैसा रे आगरो मु 40 केजी रो सुगर किनुथिली सेम पैसा रे एबे मते ताहले केते केजी अवेलेबल हबो तामने एक्सपेंडिचर सेम रहि गेला आगरो मु सुगर रे जेते एक्सपेंडिचर खर्च करूथिली एबे भी सेति की so if the price increase that 60% of value 3/5 so this will be 5 is to kete habo tale 8 then the quantity will change in the ratio 8:5 ताले जो थिरे अगर मु 40 केजी किनुथिली केते हो एबे 8 को 40 हेले 5 को केते हो ताले 25 आंसर एटा बुझी जवा in the new budget the price of kerosene oil reduced by 25%. Please try to understand. In the new budget, the price of kerosene oil reduced by 20%. If now we can purchase 18 liters, then how much was available earlier at the same price? The price changes in the ratio 25% in reduce ହେଇଛି तामाने केते हबो ताहले 4:3 then the quantity will change in the ratio 3 केते ताहले 4 ओरिजिनली 18 लीटर थिला माने 3 यूनिट को 18 लीटर 1 यूनिट को 6 लीटर 4 यूनिट को ताने केते हो कलो एटा देखिबा
Just a minute. बाहरी करो नाही सर बाहेर नाही. 54 54 आउ करो ओके देखो देखो एक्सपेंडिचर एटी कांस्टेंट अछि कि देखिलो नहीं सर ना ना नहीं सर नाही. टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी प्राइस केते पड़ी 12.5% दैट मींस 8 रु केते जी ताले 9 बट द क्वांटिटी केते पड़ी 25% माने 4 रु केते जी ताले 5 सॉरी एक्सपेंडिचर so what will be the percentage change in the quantity so this will be 4/8 and this will be 5/9 ताले एबे देखो ताले हमें क्वांटिटी रो एबे हमें रेशियो नेले केते हेबो 4/8 is to केते हेबो ताले 5/9 5/9 केते केते मल्टीप्लाई करिया दुई तरे 18 है सर 1/2 72 सर 72 so 72 1/2 multiply एटा कले काटी देबे this will be 36 this will be equal to केते हेबो ताले एटा 9 टा नै 40 हे जेबो so एटा काटी देले 4 रे कटि जेबो 9 एथि हेबो दे ओके ठीक अछि 9:10 क्वेश्चन कोन कहि छी ओरिजिनल कंजम्पशन तारो केते के जी तामने increases his consumption by 6 6 kg kg. ताले यूनिट हिसाब रे केते 1 यूनिट को केते के जाउ ताले 6 kg 9 यूनिट दरकार निश्चित आंसर बुझियला तो टिके हम हेल्थ माने कोशिश रे बारे एक्सपेंडिचर यदि समान नहीं ताहले एक्चुअली
आमे तामने एई भलिया टेक्निक लगे आमे प्रोडक्ट सिखि सारलेनी को सुशील ओके ओके एबे देखो एटा कोन कहि A reduction of 20% in the price of apple enabled a person to buy 10 apples for more for rupees 54. The reduced price of apple per dozen is केते क्वेश्चन को बुझीबा कोन कहि जेहेतु एप्पल रो रेट टा 20% कमी जाई छि सेथि पई आगरु 54 टंका रे जणे जेते टाइजली एप्पल एक्चुअली आनथिला एबे से 54 टंका रहेगा 10 टा एप्पल ताले ता कहबो अधिक मिली छि क्वेश्चन कहबा हिसाब रे वर्तमान रेट एप्पल ताहले पर डजन दामने जरी केते लेखन अछि हम से हिसाब रे बिल सॉल्व एजी करिया so a reduction of 20% in the price of apples enables a person to buy 10 apples more for 54 c क्वेश्चन कोन कहछि आगरु 54 रुपीज रे जेते एप्पल किनुथला एबे ता अपेक्षा 10 टा कम आनुछि ताले कोन ताले समान रहला टोटल एक्सपेंडिचर तामने समान आगरु भी से 54 टका नै कि जाउची एप्पल किनी एबे भी 54 टका नै कि एप्पल किनी जाउची दैट मींस एक्सपेंडिचर समान माने मु थाले प्राइस और क्वांटिटी के एबे मु खाली रिवर्स खाली कर दे प्राइस ता 20% ताले कमी गला दैट मींस 5:4 हैला क्वांटिटी केते गला 4:5 तो केते क्वांटिटी बढ़ेला 1 यूनिट क्वेश्चन कहबा हिसाब रे केतेटा एप्पल एक्स्ट्रा पहले से तमने 10 टा What is the reduced price? Reduced price पूर्व मतलब reduced quantity दरकार रेट कमी सारिला परे कोटा आनी जी एटा आनी जी एटा तो आगरु भाई ताले 5 यूनिट will be equal to ताले 40 सो एटा कोन ताले ना 40 टा एप्पल एटा बुझिवार अछि जे रिड्यूस हला प्लीज म्यूट करो वर्तमान से 54 टंका नै की गले ताकू 5 को तामने 50 ना सॉरी 4 लिखि ओके ओके 50 ताले वर्तमान से एक्चुअली 54 टका नै जाउची ताको 50 टा एप्पल दामने मिलुची दैट मींस 50 टा एप्पल रो रेट हला बे 54 क्वेश्चन कहि कोन डजन को केते सो 12 टा को ताले केते हेबो 54 बाय 50 इनटू केते हो ताले 12 कैंसिल करिवा देखो ये 6 2 गुणे एंड दिस इज रोर काटोन एटा न काटले बेसी सुविधा जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय एरा 648 डिवाइडेड 50 इक्वल टू 5 के 5 5 10 4 5 9 45 3 that is equal to 129 sorry 12.96 I think yeah that's good 12.96 जोटा मागिले करि पारिबो वर्तमान केतेरा एप्पल किनि जे पचाले कहि पारिबो 50 टा आगरु केतेरा एप्पल किनि दिले कहि पारिबो तुम 40 टा आगरु रेट थिला केतेले कहि पारिबो 54/40 हेबो कि नै आमे सब जानि जे 54 टका नै कि जाउ जे आगरु 40 टा आनुथला जानि जे एबे 50 टा आनुथला जानि जे रेट से जोटा पचाले भी कहि हेबो बुझियला समस्तंगर सर ओके Yes, देखो sir. we'll solve it in a single line please try to understand what I am going to tell you we can write it in a single line जदि 20% प्राइस जदि बढ़ी जाईची सॉरी कमी जाईची ताले मु जदि 54 टंका जदि दुकान को धरि की जाए तो आगरु जदि जेतेटा आनुथिले एप्पल प्लीज म्यूट करो के आगरु जदि मु जेतेटा आनुथिली जदि सेतकीटा ही एका आने ताले 20% पैसा मो पाखरे ताले बळी जीवो ताले 54 रो 20% पैसा ताले मो पाखरे जली बळी जीवो ना कि दैट इज इक्वल टू 10 टंका 80 पैसा मो पाखरे ताले बळी पड़ी थांता भाई क्वेश्चन कहबा हिसाब रे कोन ना ए 10 टंका 80 पैसा मु फेरे न आनी कि जेतले दुकानी को मु एटा भी एप्पल दे दियो कहूची से मते 10 टा एप्पल दे दोची ता माने 10 टा एप्पल रो रेट केते टंका हे गला 10.8 ताले 12 टा एप्पल रो रेट केते हेबो 10.8 by 10 into 12 this is 1.08 1.08 रे 12 into बोले केते हेबो 12.96 बुझियला Yes, sir. okay we'll move to the next one due to an increase of 20% in the price of x 2x less are available for 24 the present rate x for dozen is kete
दुईटा को मेथड देखो करूची प्राइस रो रेट 20% बढ़ी गला एक रो प्राइस 20% बढ़ी गला ने को रेशियो रे चेंज होला दाले 5:6 क्वांटिटी को रेशियो रे चेंज हो 6:5 जेहेतु ता माने प्राइस टा एक्चुअली बढ़ी जाई छी सेथि पई बोली मु केतेरा एक्चुअली दाले कम एक्चुअली आनिली ता माने दुईटा अंडा मते दाले कम मिलु छी 24 टंका रे सो एक यूनिट रो वैल्यू दाले 2 प्रेजेंट एक पर डजन पचारी छी 5 यूनिट को मु दाले 10 नउ छी ताले 10x रो रेट वर्तमान केते छी 24 क्वेश्चन में डजन को केते माने 12 टा अंडा रो रेट ताले केते 24 by 10 into 12 this is equal to एटा 288 28.8 जदि हम सेकंड अप्रोच जदि हम फॉलो करबा यू विल फॉलो द सेकंड अप्रोच केते हो ताले देखो सेम टेक्निक हम लगेबा 24 टंकार 20% ताले एक्चुअली बळी पडिबो गले किनी जीवो 1/5 माने केते हो एक्चुअली 4.8 जेतेबेले मो पाखरे 4 टंका 80 पैसा बळी पडिदि मो दुकानी पाखरो 2 टा अंडा ताले नै आसु जे ना कि गोटे गोटे एक रो रेट ताले केते जी ताले 2.4 ताले 1 डजन माने 12 टा एक 12 टा एक्स रो प्राइस ताले केते हो 2.4 into 12 this is 28.8 सोल ता माने वर्तमान प्राइस बिकॉज़ अंडा मते जो देबो से को प्राइस रे देबो वर्तमान रो प्राइस रे देबो मते वर्तमान प्राइस दरकार ओरिजिनल प्राइस भी बाहर करि पारि भाई तुम निजे को जदि गोटे अंडा रो वर्तमान रेट जदि 2.4 जी 20% बढ़िला परे सो 20% माने केते 5/6 5:6 को जदि 2:2 दैट मींस 6 भाग को ताने 2.4 तो 5 भाग को केते हो ताले 2 यस सर ओरिजिनल प्राइस भी गोटे रो माइले करि पारि एबे देखो कोन कहि जेटा the price of a certain article was raised by 10% in India but the consumption of the same article increased from 200 ton to 225 tons how much percent will the expenditure on the economy will increase देखो total expenditure equal to price into quantity very simple price बढ़ी 10% 10 ରୁ 11 quantity बढ़िला 200 ରୁ 225 काटी देले भी चलियो 25 8 एंड 25 9 ताले एक्सपेंडिचर केते हो रेटा 8 10 एटा 80 आउडा 11 9 केते हो ताले एटा 19 ताले केते टंगार एक्सपेंडिचर बढ़ियो आर्टिकल ऊपर 19 टंका सॉरी 19 so what will be the percentage increase 19 by 80 into 100 कैंसिल कर लेखा 25 चौ 20 चौ 5 5 4 5 this is 95/4 this is equal to 4 2 8 4 3 12 7 5 I think everybody is getting me Yes, sir. next one देखो in the expression xy square the value of x and y are decreased by 20% by this the value of the expression is decreased by that it is same देखो এটা देखो product अछि let I am taking let p equal to xy square xy square माने x into y we can write down के भी करिवनी जे y 20% जदी कमी गला y square रे 400% कमी जीवो के भी करिवनी भूल हे सब कहि दउ जागरो आमे सबले लिनियर फॉर्म रे एक्चुअली भांगीबा एमदी देखो इले कोन हो जे हेमती हेले तो पूरा गोटे ट्रायंगल को जदी दामने 10% दुही साइड जदी बढ़े दियो जदी काहर रेक्टेंगल को टोटल तो ताले जदी 100% हेमती हेले एरिया बढ़ी जानता बाकी 10% साइड बढ़ले एरिया कोनो डबल हेबो कि केबे भी हेबोनी सो के भी एक्चुअली सेमती करिवनी या तो एबे खाली बुझिबा देखो इफ द बोथ x and y आर डिक्रीज बाय 20% x 20% डिक्रीज हेले केते हेबो ताले 5 रु 4 y 20% डिक्रीज हेला 5 रु 4 ये भी केते हो 5 रु 4 so p equal to xy square will be equal to this is 125 this is equal to 64 केते ताले कमी गला देखो this is 61 so percentage हिसाब रे 61 by 125
into 100. This is 425, this is 525, this is 244 by 5 equal to 5 चौक 20, 4 5 8 40, 48.8%. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll move to the next one. This is also a very simple questions. Just wait. एतरे ही जाओ. Question एठी देखो कौन देखो कहि जे. The price of soap collectively decided by 5 factors. One is research, raw materials, labor, advertisement, transportations. Assume that the functional relationship is price of soap equal to K into that is product method अछि. Research cost, raw material cost, labor cost, advertisement cost, transportation cost. If there are respective changes of the 10%, 20%, जो minus वाला decrease plus वाला किछि न दे that is increase. So it's very simple. Price equal to कहाँ पर depend करू जे ना first time research cost. एटी लेखिन कोडा research cost. Next आला raw material. Next आला labor cost. Next आला advertisement cost. Next आला transportation cost. So देखा है केते केते बढ़ी respective changes of 10%. 10 रु ताले 11. Raw material 20%, 5 रु 6. 20% reduce हला ताले 5 रु 4. 25% बढ़ी जी 4 रु 5. 50% बढ़ी जी ताले 2 रु 3. डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करो नले मल्टीप्लाई कला परे भी हमें कोन बाहर करू जे रेशियो ही तो का बाहर करू जे ताले मूल रु ही काटी दियो 4 4 2 3 जी कटि जीवो रेशियो 5 5 2 3 जी कटि जीवो आउ कोटा कटिवो या 2 रे हम काटी परिया जस्ट मु रखि देछि तथापि 5 2 गुणे 10 10 एटा केते बडा रहले 100 एटा 663 198 318 या वेरी गुड ताले प्राइस ता केते परसेंट कमी जीवो 100 रु सॉरी बढ़ी जीवो 198 that is 98% the increase habo so price will be 98% बुझियला सेरे दुईटा मेथड थला मोर देन दुईटा आ किछि भी ए सेम क्वेश्चन एटा लिंक अछि इन द अबव क्वेश्चन इज द रेस्पेक्टिव जेटा करी कि तमेटा करबो एटा तीनटा नंबर टोटल रहला लास्ट नंबरटा मु कर दोछि एटा से क्वेश्चन रहगा हला 60 लिखा है इन द अबव क्वेश्चन इफ द रेस्पेक्टिव चेंजेस रिसर्च रॉ मटेरियल एटसेट्रा देके पचारि जी एटा बुझिबा the tax on a commodity is diminished by 20% and its consumption increase 50 find out the effect on revenue देखो हमर एक्सपेंडिचर जोटा गवर्नमेंट रो रेवेन्यू सेटा गोटे बिस्कुट पैकेट रो रेट हला हमर 10 टंका एथिरे टैक्स हमें दोजे मने करा जो 2 टंका आ कंजम्पशन ता माने कोन मु जदी गोटे पैकेट बिस्कुट खाइली गवर्नमेंट मोटू ताले 2 टंका रेवेन्यू पाइला 18 पैकेट खाली ताले 36 10 पैकेट खाली ताले 20 चललाई बोले that means revenue ता ताले पुनी कहा ऊपर डिपेंड कला definitely that is the tax into consumption so question कहि जे the tax on a commodity diminished by 20% ताले 5 रु केते बजे ताले 4 consumption increase by 15% 15% माने केते हेबो 3/20 ताले केते होय ताले 20 रु ताले 23 हेबो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू केते 20 पंजा ताले 100 and this is 23 चौ केते हेबो ताले 92 so research जेंडा केते परसेंट ताले नि 8% ताले कमी गला so this is the answer 8% reduce next class में मने पकेबो एथरे एताको आमिली x + y + x5 100 एकले हम सॉल्व करबा x + y + x5 100 सॉल्व करबा आंसर बाहरिबो मु नेक्स्ट क्लास में डिटेल बतैबी x + y + x5 100 हम कोई जगह अप्लाई करबा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ले अप्लाई करि परिबा हम सिखि जबा नेक्स्ट क्लास बुझियला कि तो समस्तंगर Yes, sir. ओके क्लास काली एक्चुअली हे न पारे हला काली मोर गुटाडी जीवार से भुवनेश्वर जो सेन जाईथि बाइक टाइल गुट अलगा रखि काली जे कि मु नै आसी काली सेकंड हाफ रे मु देखु छी जदि सेही 6:30 7 तक मोते लागु जे मु पळे आसी जदि पळे आसी ताले डाउट क्लास से ताले नै जबा